तो आज हम बात करने वाले हैं प्री ओनरशिप रिव्यू किया कैरेंस का। कीप वॉचिंग। सो यस, मेरा नाम है अभिनव, कैमरे के पीछे आशुतोष श्रीवास्तव। आज हमारे साथ जो है हमारे सर हैं मिस्टर प्रमोद प्रभुदेव, और ये हमारे पहले क्लाइंट है एज फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। और एंड माइंड यू हैव सीन हिम बिफोर। कहाँ दिखा है आप ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। एंड ऑफ कोर्स यार, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ देखा तो ऊपर लिंक आ जाएगा, वो जाके आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। कोई नहीं, अच्छा डाल दे। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट Q&A टाइप्स वो है। सर ने एक वेरिएंट बुक कराया। सर आपने कौन सा वेरिएंट बुक कराया? लेट मी टेल, किया Carens Prestige Plus. Yes. That's a automatic petrol. Manual diesel. That's a manual diesel. बेसिक स्पेसिफिकेशन बताता हूँ गाड़ी की। 1.5 डीजल हमने बुक कराया है, 115 PS ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन और क्रूज कंट्रोल वगैरह। बेसिक सारी मतलब प्रेस्टीज प्लस वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हम लोगों ने बुक कराया है। और सर को उसी को लेके आज हम लोग क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, चीजें कि सर का पहले कौन सी उन्होंने गाड़ी देखी थी, सर का बजट क्या था, और सर ने कैरेंस ही क्यों बुक करी है, उसके अलावा और कोई किसी गाड़ी की तरफ क्यों नहीं गए। तो वही सब पूछना है। तो पहले मैं तेरे मन में कुछ सवाल है वो पूछना, फिर मैं पूछूंगा। सो शिफ्ट टू सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन वाज इज दिस कि व्हाट वाज योर इनिशियल बजट? सबसे पहले आपने क्या बजट सोचा था? उसके बाद आई नो आपने बजट को रेस किया है अपना, तो अब वो रेस करके ऐसा कैसे, और क्या आप मतलब सोचते हैं उसके लिए? Right. So initially the idea of buying a vehicle जो हम खरीदना चाहते थे वो फैमिली के लिए। Okay. मेरी फैमिली में I have 2 little girls, my parents, my in-laws, my wife. Okay. So we needed a vehicle mainly for long distance commuting, family trips, family tours, और ऐसा नहीं कि बार बार 2-2, 3-3 कार लेके जाओ। सो इसीलिए हम सोच रहे थे कुछ ऐसा गाड़ी लिया जाए जिसमें सब लोग फिट हो सके। ओके। तो स्टार्टिंग में हमें ये 7 सीटर भी हमने सोचा नहीं था। इट ऑल स्टार्टेड विद बाइंग अ बिगर कार। द कार्स दैट वी हैव हैड इन द पास्ट इज one of I would say a customized Baleno. This was a Baleno Altura, so the car stayed in the family since 2001. This was a station wagon. Okay. And then I am an auto enthusiast. I love this car a lot. I maintained it extremely well. And now my wife, for her and for family runs and all that, I bought a Ritz, a Maruti Ritz. That vehicle also served us very well. And after my recent posting into Dehradun, and since my family is away from me, now vehicle maintenance would be an issue. That's why I sold both my vehicles before coming to Dehradun. And now my family needed a vehicle, okay, that can be driven, okay, by, I would say a driver, because wife does not get into driving as yet. So she's a very busy person and she doesn't want to take that headache. So having said which, anything that can transport the babies, Okay. the oldies in the family, and also the the entire family for that matter. So सोचते सोचते ये लगा कि पहला जो हमारा प्लान था वो ब्रेजा या फिर ब्रेजा के वेरिएंट सेगमेंट में कौन कौन आता है सब देख रहे थे। ठीक है, ब्रेजा के सेगमेंट में आता है आपका नेक्सॉन। ठीक है। बेसिकली ही वांटेड अ सब 4 मीटर एसयूवी जो कि 4 मीटर्स के अंदर आती है, और सर का प्राइस रेंज भी वही था। 12 to 13 लाख का बजट जो था सर ने इनिशियली डिसाइड किया था, एंड उसी में हम लोग कार डिसाइड कर रहे थे। एंड वी जीरो डाउन टू 2 व्हीकल्स। One was the Maruti Suzuki Brezza, the newly launched Brezza, and the other one was the newly launched Venue. So these were the 2 vehicles that we zeroed. And also we were thinking about Nexon. So sir, that was very obvious that you shifted towards 7 seaters. So ये सब तो हमने सब कुछ साइड में रख दिया था। Now 7 seater में हमने कुछ मेन गाड़ियां देखी थी। What is your budget right now इस समय?
So it started by enhancing the 12-13 bracket to 15 lakhs. Okay. And after 15 lakhs, we saw the available vehicles in that segment, which can hold 6 or 5 to 6 people comfortably. So we thought of Ertiga. Okay. Then we looked at XL6. Okay. And then while we were looking at all the variants and all the features, जब गाड़ी ले ही रहे हैं और इतने लोग comfortably बैठना है with all the necessary features, infotainment system and everything, so we started comparing, thanks to the Torqueify team. So we did a lot of research, and I was not even aware of the car that I have zeroed down on right now. अभी जो decide किया था, मुझे ये model मिल रहा है, ये भी नहीं मालूम था. But then again, the team told me that sir, ऐसे गाड़ी है, Kia Carens Yes. is the vehicle, and till then I was only thinking Kia had bought out 2 of their vehicles. I knew about the Carnival. I also knew it is way out of my budget. Right. But once we were discussing Seltos and the Sonnet and everything, so I learned about Carens, and my God, I was blown away by looking at the fit and finish of the car. I had experienced an Ertiga before. I also saw the XL6. Okay, so XL6 to Ertiga, definitely there is a lot of changes. Okay, but then again, when I saw XL6 and compared it with what is being offered on a Kia Carens, hands down, so my heart rested with Kia Carens. The family also loved the car, and also appreciated the fact that yes, why do we need an SUV? Okay, so majority of our we are not going to go on adventures every day. So what we need is a car that can carry our babies as well as our oldie goldies, really comfortably, do some good distances like 500-600 kilometers in a day with good comfort. So then, 6-seater or a 7-seater is what is the real requirement. Ye nahi tha. We were just thinking, because we had sedans and hatchbacks, now we should go for a SUV or whatever. That was what was there. But then when we sat and when we consulted, when we discussed what is the requirement to what is the product that fits the requirement, so it was quite obvious that what is needed is a good family car, for carrying everybody under one roof. So that had to be a 6 or 7 seater, and Kia Carens, for the kind of budget that I had, of course I'm stretching a little bit now. Now it is going almost up to 17 lakhs approximately. 17 lakhs approximately. I'm going for the mid-level variant. That's the Prestige Plus. That is the Prestige Plus. And again, we thought because there are so many trims available for Carens, and there is such a huge price gap between the top end and the basic version, and there are also 2 engine variants, a petrol and a diesel. So what is affordable, what is better for the long distance runs, whether it has to be an automatic, manual, at every stage, there has been a lot of careful thought process, with the team, and I'm glad, with their help. Now I have booked my Kia Carens Prestige Plus diesel. It is going to be delivered day after tomorrow on the auspicious occasion of Ganesha Chaturthi. Okay, and of course Torqueify is going to help me with all my PDIs, pre-delivery inspections. The car was not quite, I am from Karnataka, but I'm working right now in Dehradun. And वीडियो का ड्रामा, फिर से आईफोन की स्टोरेज भर गई, फिर हमें को डिलीट करना पड़ा, और फिर हम दोबारा शुरू करेंगे. कोई बात नहीं. हमने बात कर ली थी कि सर ने एक प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट को करा दिया था, एंड
अब मेन चीज़ ये थी सर, आपने XL6 देखी, ठीक है, यू हैव सीन अर्टिगा, यू हैव सीन किया नहीं, इससे कैरेंस। पहले वो आंसर कर रहे थे कि जब वो फैमिली पूरी कर्नाटका में है तो फिर वो यहाँ से गाड़ी क्यों ले रहे हैं। ओके वो चीज़ answer कर रहे थे। ओके, सो आप ये बताए थे कि जब आपकी पूरी फैमिली कर्नाटका में है, यू आर बाइंग इट फॉर कर्नाटका, सो आप यहाँ से क्यों ले रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स द आंसर इज अवेलेबिलिटी, ठीक है। और ये है ना, अवेलेबिलिटी की सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी कि गाड़ी कहाँ अवेलेबल थी। अभी सर आपको कितने दिन में मिल रही है? हाउ मीन्स यू हैव बुक्ड अ वीक अगो? Yes. So We you booked it last Wednesday and we are getting getting the it delivery on this Wednesday. Wednesday. So So full 1 week and हमने पूरा हर जगह, बाकी सबने सर के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने चेक करा था डिफरेंट सिटीज में, तो हर जगह बुकिंग मिनिमम 8 to 9 मंथ्स जा रही थी। बस यहीं पे था कि हमें फॉर्चुनेटली गाड़ी थोड़ी सी जल्दी मिल गई, किसी कस्टमर ने कैंसिल करी और हमें जो है वो गाड़ी जल्दी मिल गई यहाँ पे 1 हफ्ते में। यही अवेलेबिलिटी की चीज़ है। एंड और यू विल ऑल्सो गेट टू नो द कलर, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कि बताएंगे। क्या कैसा है। वो आपका एक डिलीवरी ब्लॉग होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। विल सी कि क्या क्या उसमें कवर किया जा सकता है। बट स्टिल नाउ माई क्वेश्चन वॉज दैट यू हैव सीन अर्टिगा, यू हैव सीन XL6, यू हैव सीन किया कैरेंस, एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी एंटर इन किया तो हम उधर देखते हैं सेल्टॉस, क्योंकि जो देख घुसते ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई बहुत प्यारी गाड़ी है, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस व्हीकल लुक्स फ्यूचरिस्टिक। कैरेंस है वो लगता है फ्यूचरिस्टिक है, फीचर्स उसके लगते हैं फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। कैरेंस दिखने में बहुत प्यारी गाड़ी है। एंड ऑफ कोर्स जब मैं किया की बात करता हूँ, टेक में वो बहुत ज़्यादा ऊपर लीप लेती है, सो लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट यू चोज कैरेंस, वाई नॉट XL6, ठीक है, वाई नॉट अर्टिगा, ठीक है, वाई ओनली XL6 एंड दैट टू अ डीजल वेरिएंट, ऐसा क्यों? मैं कार को सिंपली बहुत सिंपली समझता हूँ। ओके, एक है कार का इंटीरियर्स। ओके, इंटीरियर्स में आता है वंस यू स्टेप कार के अंदर जब आप बैठते हैं तो आप कैसे महसूस करते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। उस डिपार्टमेंट में मैंने किया सबसे बेस्ट। ऑफ कोर्स, बिल्कुल Yeah. सही बात। हाँ, तो और नेक्स्ट आती है या योर एक्सटर्नल्स। यू नो, एक्सटर्नल्स में मैं गाड़ी की मैकेनिकल्स, यू नो, दी ओवरऑल फिट एंड फिनिश, गाड़ी से जब आप बाहर आओगे तो कैसे गाड़ी दिखती है, उसकी पेंट हो या फिर द बिल्ड क्वालिटी हो, एंड ऑल द मैकेनिकल्स दैट हैव गॉन इन टर्म्स ऑफ द इंजन, द हार्ट, यू नो, और उसका सस्पेंशन हो या फिर टायर साइजेस हो, ये सब में मुझे किया बहुत अच्छी तो है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि XL6 का इंजन भी मुझे अच्छा लगा था। ये पेट्रोल हाइब्रिड जो है अच्छा माइलेज देती है एंड इट्स अ प्रूवन एंड ट्राइड एंड टेस्टेड वर्कहॉर्स। ओके, तो इंजन डिपार्टमेंट में मैं XL6 से भी खुश था। लेकिन यहाँ पे जो था, मुझे डीजल वेरिएंट भी मिल रहा था जो XL6 में नहीं है। Okay, so I was getting the luxury and also the diesel variant, which is fuel efficient again, a very good figures again. In terms of power also it's better. In terms of power also is very good, and so that department again, I chose Kia under the given conditions. And most importantly, jab aapka, when you look at your internal well-being, your external well-being, the other thing is paisa, So at what price is it coming? What is the cost of maintenance? What would be the service, spares, so on and so forth. तो ये सब अगर सोचा जाए तो of course Kia is definitely not in the budget league. थोड़ा बजट से ऊपर जाना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। आप लोग ये यू कैन नॉट कंपेयर इट टू BMWs और ऑल दी टॉप सेगमेंट कार्स। इट इज नीदर बजट, नीदर very very premium. Okay, so it is something which can be looked at as an upgrade from basic budget into the next segment. It is clearly an elevation.
So I also wanted that elevation because we are at that stage of our lives also now. So थोड़ा elevation चाहते थे. कुछ नया मांगता है जिंदगी में हाँ. ऐसा. तो इनके जो 5 year hassle free ownership है किया का, और service and spares they have improved like anything. It is quite accessible, and of course डीजल मिल रहा है तो मेंटेनेंस लॉन्ग डिस्टेंसेस पे डीजल वर्कआउट हो जाता है. So that is why we decided finally on Kia Carens. So sir, why you also had an option of 1.4 turbo petrol engine in the Kia Carens, which produces 142 horsepower and 242 Nm of torque. So why didn't you go towards that engine? कितने की थी वो? 20,000 rupees lesser than the diesel variant. Okay. Well, हमने देखा कि पावर तो ज्यादा है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स वर नॉट वेरी ग्रेट. Okay, and well, अवेलेबिलिटी हाँ. इम्पोर्टेंट थी अवेलेबिलिटी. हाँ. जो अभी सर को मिल रही है दैट्स नियरली कि ऐसा हाँ किस्मत से मिल रही है एकदम फटाफट, वरना वेट करो 8 महीना. सो दैट्स आई थिंक इट्स अ पॉइंट एंड इफ यू वांट टू से समथिंग. हाँ. और see, at the end of the day we want good cruising when you are there in the family. We don't want to be attempting some great speeds or whatever. Exactly. So with a higher power delivering engine, diesel torque figures are good, and I think we can stay in the power band with a diesel engine also. Right, 115 PS is not a very less power. It's fairly good, and of course आपके daily uses के लिए बहुत अच्छा है. Daily usage का you drove both the vehicles and I also drove both the vehicles. You didn't drive it, but what I believe Kia is much more livelier. I would say XL6 was somewhat sluggish. ऐसा लगता है कि थोड़ा उठ रही है. That means वो होता है एक रील था, it is being sent. So वो XL6 में लगता है, but Kia ऐसा नहीं लगता है. What I think Plus is Kia की एक चीज और है, XL6 is way shorter in length as compared to Kia Carens. Kia Carens is a D segment SUV. हाँ, I was coming to the point. How did you like the comfort in Kia? I found Kia to be very spacious, very roomy, and I can pack a home in there if you actually look at it. Exactly. So both the second and the third row can be folded, and even if you're not folding, there is quite a lot of boot space at the back. Ample amount of space. Ample amount of space, and the interiors are designed very cleverly. The ingress and the egress, कार के अंदर जाना और बाहर आना बहुत effortless है कार में. Okay, so third row भी काफी comfortable है. Okay, तो इन सब की वजह से मुझे किया का डिजाइन लैंग्वेज बहुत ही अच्छा लगा. मारुतिस और सुजुकीस तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो किया क्यों नहीं ट्राई करे इस बार. तो ये थॉट प्रोसेस से किया पे आए हम. इनफैक्ट लोगों के लिए बहुत ज्यादा कभी कभी डिफिकल्ट होता है एक गाड़ी एक ब्रांड के से लॉयल्टी हटके मतलब किसी और ब्रांड की तरफ शिफ्ट होना. ये और अगर ये किसी से भी करवाना है, सो दैट नीड्स कि उस गाड़ी को उतना अच्छा बनना पड़ेगा. सो आई बिलीव किया उस लेवल पे पहुंच रहा है कि दैट्स गुड. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन एक जो आपकी किया है दैट हैज गॉट 6 एयरबैग्स. So so I would say कि in the market there are many vehicles जो कि 5-star rated हैं, 4-star rated हैं. That's good, but the primary concern here was not that much as to safety, क्योंकि हाईवेज पे नहीं जाना है. ऐसा नहीं है कि हम स्पीडिंग कर रहे हैं. 1 minute. ओके, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीडिंग कर रहे हैं. ये मेन है इन सिटी ट्रैवल, इंट्रा सिटी ट्रैवल आई वुड से, एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस बट फैमिली के साथ. So I would say Kia is a 3-star rated vehicle. Fair enough for the safety of the passenger and the people sitting in there. And I would say कि एक अच्छा combination, एक अच्छा बहुत बड़ा पैकेज मिल जाता है. Would you want to say ask something? कुछ और? मेरा यही था, मैं अपनी चीज बोलना चाहूँगा कि Carens हम लोगों ने इसीलिए चूज करी क्योंकि पहली चीज
इस सेगमेंट में, मतलब अगर मैं प्राइस सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट में अगर हम 7 सीटर के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास XL6, अर्टिगा और Carens है जो कि 3 7 सीटर्स में आती है। ठीक है, इसके अलावा और हमारे पास कोई 7 सीटर में ऑप्शन नहीं आता है 7 या 6 सीटर में। सो इसमें सबसे ज्यादा इसमें सबसे सेफेस्ट अगर हम देखा जाए, सबसे बेस्ट अगर वैल्यू फॉर मनी पैकेज, सेफेस्ट, कूलेस्ट आई वुड से, एंड ओके बेस्ट प्रॉपर एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज, ऑलराउंडर पैकेज अगर देखा जाए तो किया Carens ही थी जो कि हमें प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रही थी। एंड डेफिनेटली अगर हम 5 सीटर ऑप्शन में रहते फिर हमारा बहुत वाइड रेंज बन जाता। हाँ, तब हमारे पास 5 सीटर में काफी चीजें खुलती हैं। 5 सीटर में फिर ये था कि हमारे पास सब 4 मीटर भी रहता, हमारे पास मिड साइज एसयूवी सेगमेंट भी रहता, हमारे पास जो टॉप सी एसयूवी सेगमेंट है, हैरियर वगैरह सेगमेंट है, हमारे पास वो सेगमेंट भी इंक्लूड हो जाता है इसमें, थोड़ी सी अगर हम बेस मॉडल वगैरह की तरफ जाते हैं तो 5 सीटर, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं था फिलहाल, तो इसलिए 7 सीटर में वी चोज द बेस्ट कार पॉसिबल और हमने Carens चूज करी। एंड हाँ, बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा ओके यू आर गोइंग फॉर 17 लाख 18 लाख, स्कॉर्पियो क्यों नहीं लिया? भैया स्कॉर्पियो लेने का बहुत मन है, सबको मन है स्कॉर्पियो, अगर एक हफ्ते में को टाइम, सो वही है, यही एक प्रॉब्लम है कि 1 साल का वेटिंग पीरियड से भी ऊपर लग रहा है। स्कॉर्पियो स्टार्ट्स एट 12 लाख, 12 लाख एक्स शोरूम, और ऑन रोड आते आते मिल रही थी हमें अच्छी खासी, सर वाज रेडी टू स्ट्रेच हिज बजट टू 20 लाख रुपीस। हाँ, सो Z6 उसका मिल रहा था आसानी से। ओके, बट प्रॉब्लम वही अवेलेबिलिटी का इशू है। सो ओके, वो है। एंड ऑफ कोर्स जब ये वीडियो आती है बहुत जल्द you'll be seeing his vlog and on his channel and also on our channel, so stay tuned and Karen's coming soon. So do you want to say something? Yeah, so I would say आप अगर फैमिली हो और आप बहुत सारे मेमोरीज बनाना चाहते हो सारे एज ग्रुप के पीपल से, ओके, तो दिस इज वन कार आई गेस which is good for 60 plus as well as you know young kids, you know. So I would say even for a Scorpio getting in and out, you know, for a 60-year-old could be a challenge, okay. But Kia में जो है वो there is also a step, क्या कहते हैं उसे, that's a pedal, side step and all that, और बहुत okay, that's something a part of an accessory that you can get in many cars, but I would say Scorpio is not meant for that family part of thing that you were thinking of. Scorpio is really oriented for a off-roading kind of हाँ, that's not meant कि हाँ भाई हम लोग फैमिली के लिए ले रहे हैं, इसलिए enthusiast and what I believe that's a perfect car that you are buying. And now मेरे personal interests और passions के लिए go anywhere kind of attitude का हूँ और rider भी हूँ, तो मेरे लिए Scorpio बहुत ही बढ़िया रहेगा। And very soon we might see another car bought by him, and we'll see what the car is. So okay, पकड़ लो चलो भाई। So if you want to see the vlog and ownership review, पूरा full detail review, ride review, सबके लिए Torqueify को फॉलो करो। अभी कोई वीडियो में थैंक यू नहीं बोलेंगे क्योंकि किया ने ऐसा कुछ किया नहीं है। So जब किया अपनी सारी गाड़ियों के लिए देगा then we'll get the showroom name, and till that stay tuned and अब वीडियो एंड करते हैं। And sir, how excited are you on a scale of 1 to 10? You're getting your delivery day after tomorrow. Like I said 11. और ये भी प्लान है क्यों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक तो अवेलेबिलिटी है और एक और फैक्ट है, कुछ एडवेंचरस ट्राई करना चाहते हैं। गणेशा के दिन जब गाड़ी की डिलीवरी लेंगे तो उसी दिन ये देवभूमि है और गंगा जी से मिलने जाएंगे। This is very auspicious. Same time last year, if you ask me, I never thought I would be in Dehradun. Right. But देवभूमि में ये ले रहे हैं, ये मेमोरी फैमिली के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। और यहाँ से प्लान है कि वापस बैंगलोर तक ड्राइव करके जाएंगे हम, और वो भी एक यूजर एक्सपीरियंस आप सबको मिलने वाला है। ओके, I would say आएगा रे आएगा, गणपति बप्पा आएगा, Carens पे आएगा। So अब वीडियो एंड करते हैं। तो ये सारी चीजें वेरी और डिलीवरी व्लॉग आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा।
हम हाँ। लोग अगर गाड़ी की पीडीआई के लिए जाते हैं तो वाला भी आपको हम पूरा दिखाएंगे कि अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको पीडीआई जो है कैसे कैसे करनी चाहिए, आपको क्या क्या चीजें हैं जो गाड़ी में चेक करनी चाहिए, वो सारी चीज हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। एंड यही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो हमारी बिल्कुल पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, वीडियो को कमेंट में जो भी सजेशन है प्लीज हमें वीडियो से रिलेटेड सब्सक्राइब करके कल का ऑल पे दबाइए ताकि और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो डालें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। इस वाले वीडियो से नई वीडियोस हम जल्दी जल्दी लेके आते रहेंगे। दिस इज आवर थर्ड वीडियो टुडे। इतनी मेहनत करी आप लोगों के लिए आज, प्लीज लाइक वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू। कैमरामैन दोनों के साथ अभिनव गर्ग साइनिंग ऑफ। बाय बाय।